Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and now the headlines. Cambodia and Thailand have agreed to an immediate and unconditional ceasefire starting at midnight, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said on Monday following days of deadly clashes along the disputed border. Five people were killed in a mass shooting at a food market in Bangkok on Monday. The suspect in the attack at Orthor Kor market died after taking his own life, police in Thailand's capital confirmed. Defence Minister Rajnath Singh on Monday said that India's actions were neither provocative nor expansionist, and India halted the military action after 4 days only after achieving the objectives of Operation Sindoor. Two Catholic nuns from the Assisi Sisters of Mary Immaculate were arrested at Durg railway station in Chhattisgarh on Saturday, July 26, from Narayanpur district. An encounter broke out between terrorists and security forces, killing at least 3 terrorists in the Harwan area near Dachigam National Park on Monday as the Indian Army launched a major anti-militancy operation codenamed Operation Mahadev. And now the news in detail. A gunman unleashed horror in Bangkok on Monday, killing 5 people at a bustling market before turning the gun on himself. Local authorities confirmed the gunman initially targeted 3 security guards, then a 4th victim over a personal dispute, according to Siam Bunsom, chief of the Metropolitan Police Bureau. The attack continued as the gunman reloaded, entered the market and shot a female merchant, injuring another in the process. Police footage reveals the suspect identifiable by a white hat and backpack navigating the Orthor Kor market's parking area. Eyewitnesses Duang Napa Yerunsiri recounted the ordeal, stating he fired many shots rapidly, prompting her and companions to seek immediate police help. While no tourists were victims, the incident highlights ongoing issues of gun violence in Thailand and raises concerns for the nation's crucial tourism sector. Cambodia and Thailand have agreed to an immediate and unconditional ceasefire starting at midnight, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said on Monday, following days of deadly clashes along the disputed border of the 2 Southeast Asian countries. The agreement was reached after Cambodian Prime Minister Hun Manet and acting Thai Prime Minister Phumtham Wechayachai held talks at the Prime Minister's official residence in Putrajaya, just south of Kuala Lumpur, the Bernama news agency reported. According to Malaysia, which mediated the discussions, the 2 sides will hold a meeting of regional commanders from both the Cambodian and Thai militaries on July 29 to follow up on the ceasefire. The border violence has claimed at least 35 lives and left more than 200 injured, based on figures from Thai and Cambodian officials. Both nations have accused each other of initiating the latest round of hostilities. The dispute over the border goes back decades, CNN reported. Despite ongoing accusations of renewed artillery strikes in contested areas, leaders from Thailand and Cambodia met in Malaysia today in an effort to defuse the deadly conflict. Thailand's acting Prime Minister Phumtham Wechayachai and Cambodian Prime Minister Hun Manet attended the meeting. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. Defence Minister Rajnath Singh on Monday, while paying tribute to the brave soldiers who sacrificed their lives for the nation during Operation Sindoor, asserted that Pakistan failed to inflict any damage on India's war assets. During the debate in the Lok Sabha on Operation Sindoor, Defence Minister said that soon after Pahalgam attack, the well-coordinated strikes carried out by our armed forces hit 9 terrorist infrastructure targets with precision. In this military operation, it is estimated that over 100 terrorists, their trainers, handlers and associates were killed. Most of these were linked to terrorist organizations such as Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen. He also added that the entire operation was concluded within 22 minutes. Defence Minister Rajnath Singh further said that India paused its action because the
pre-decided political and military objectives were achieved and said that Operation Sindoor was paused under pressure is baseless and absolutely wrong. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए आज जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, An encounter broke out between terrorists and security forces, killing at least 3 terrorists in the Harwan area near Dachigam National Park on Monday as the Indian Army launched a major anti-militancy operation codenamed Operation Mahadev. 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. Operation continues. Srinagar-based Chinar Corps of the Army posted on X. The identity and group affiliation of the slain terrorists were being ascertained. Security forces had launched a massive operation to track down the perpetrators of the Pahalgam attack that left 26 people dead
And intelligence inputs over the past month had suggested that the terrorists might have moved towards the Dachigam area, which is around 20 kilometers from Srinagar's city center. However, it was not immediately clear if the 3 slain terrorists were involved in the April 22nd Pahalgam attack. Security forces acting on an intelligence input launched an anti-militancy operation in the Mulnad area of Harwan on Monday morning. 2 rounds of gunshots were heard from a distance as security forces were carrying out searches of the area. Reinforcements were rushed to the area and the combing operations intensified, which led to the elimination of the 3 terrorists. Yogi Adityanath has become the longest serving Chief Minister of Uttar Pradesh. He has completed 8 years, 132 days in the office. With this, he overtook Govind Ballabh Pant as the longest CM of the state, who was in office for 8 years, 127 days. Yogi Adityanath's political journey began in 1998 when he was elected as an MP from Gorakhpur at the age of 26. He is a strong supporter of Hindu nationalism. Cabinet Minister Sanjay Nishad praised Yogi Adityanath and appreciated the way UP government built the Ayodhya Ram temple and reduced the crime rate in the state. He spoke about how young people have been provided employment, made roads, potholes free, and took tough decisions. मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया और विश्वास किया और उन्होंने उस विश्वास के साथ काम किया कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश बनाया, अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर लाया, कानून व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज भी किया उन्होंने। हम मछुआरों के लिए और मतलब खुशी की बात है और उनको तो बधाई देते हैं अपनी तरफ से कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर के साथ साथ उसमें भगवान राम के साथ निषाद राज को भी जगह दिया। अतिथि भवन भी निषाद राज के नाम से बनाया, सब माता सबरी, और निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। 56 फुट की मूर्ति भी लगाई। मुख्यमंत्री संपदा योजना से पट्टे धारकों को 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान देना, एरेटर है महिलाओं के नाम से देना, उनके लिए बीज बैंक के लिए पैसा देना, मछुआ कल्याण कोष से उनको उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कि अगर उनके पास पैसा नहीं है, 2 लाख से कम आय है तो उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए देना है। इंटर में है 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर है 50,000। इनके इलाज के लिए एक आयुष्मान भारत कार्ड नहीं निषाद, तो वो भी 5 लाख का कवर है। उसके बाद माता सुकेता, भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के माता जी का नाम से एक हमने केज कल्चर शुरू की। ये तमाम परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ सामंजस्य स्थापित करके उत्तर प्रदेश को बेहतर परिणाम देने में, सबसे आगे आने में अब रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने सबसे अधिक दिन काम किया। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Purugule 2026-27 session la admission khuli ase. Itu nimide selection test karne online application dibole paribo. Apply kurubole July 29 tak paribo. Kun admission nimide test dibole paribo bole JNV Thaka district la bona fide resident hobole lage. Aro itu district te sarkari noilibi sarkari recognized school bra class 5 purina thakibole lage. Candidate to class sobte full academic session purina sarkari school bra class 3 or 4 pass hobole lage. Aro itu por candidate to May 1 2014 or July 31st 2016 la majode janam kuriya laga hobole lage. JNV do co-educational residential school ase. Kode mota aru maiki laga alag hostel ase. Free education boarding or lodging ase. JNV de cultural exchange or sports भी promote करे. NCC Scouts and Guides or NSSP ase. District khande 75% seat to rural areas la candidates khande में reserved ase. SC, ST, OBC or Divyang candidates khande में भी ase. और माइकी khande में सबसे कमती होली भी 1/3 seats reserved ase. JNV bra 2025 JEE mains day 4,492 students qualify हुई से.
JEE Advanced 2024 पे 1083, NEET 2024 पे 19183 और 2024-25 बोर्ड एग्जाम्स थे क्लास 10 खान 99.49% और क्लास 12 खान 99.29% पास हुई सी एप्लीकेशन फॉर्म दो NBS लगा ऑफिशियल वेबसाइट नोइलिबी डिस्ट्रिक्ट ते थका JNB ब्रा लोबले पाड़ी और इतु फ्री ऐसे एप्लीकेशन दो फिलअप करी ना अपलोड करी दिवी नोइलिबी स्कूल दे भी सबमिट करूबले पाड़ी लास्ट डेट तो जुलाई 29, 2025 ते ऐसे Welcome back. The Christian community has condemned the arrest of two nuns from Kerala and a man by the Chhattisgarh police on allegations of religious conversion. According to reports, the arrest was made following the insistence of Bajrang Dal members. The two Catholic nuns from the Assisi Sisters of Mary Immaculate were arrested at the Durg railway station in Chhattisgarh on Saturday while accompanying three women aged between 18 and 19 from Narayanpur district. The man was identified as Sukhman Mandavi, a resident of Narayanpur. A report quoting Father Sebastian Pumatam, Vicar General of the Raipur Archdiocese, said the nuns were accompanying the women to place them in convents in Agra for domestic work. These women were being offered jobs as kitchen helpers with a monthly salary between Rs 8 to 10,000. They had the consent letters from their parents and were all above 18 years of age, said Father Pumatam. After the FIR was registered against the three people on the insistence of Bajrang Dal members, the women were sent to a government shelter while the two nuns and the man were sent to judicial custody till August 18th. It has been alleged that no church representatives were allowed to meet the detained nuns and that there is reason to suspect that the young women were coerced into changing their statements to say that they were being taken against their will. The Congress party, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and KC Venugopal, have condemned the detention of the nuns. Congress General Secretary KC Venugopal has also written to the Union Home Minister and the CM of Chhattisgarh demanding strict action. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan on Sunday urged Prime Minister Modi to intervene and ensure justice for two Malayali Catholic nuns who were arrested and jailed by Chhattisgarh police after being falsely accused of forced religious conversion by Bajrang Dal members. This is a total, it's an atrocity, I would say. The nuns, the sisters, the Christian congregations, the missionaries, they do such great service to the nation and people at large without even looking which religion anybody belongs to, be it health front, be it education sector. But such nuns, sisters have been charged, attacked by Bajrang Dal, then arrested for no reason, and the sections assigned are shocking. We want to ask, does Bajrang Dal controls the Home Ministry of Chhattisgarh? Is that how the system works there? Do they decide who should be arrested? Can they just attack anyone anytime? So this is it is again an attack on democracy. The sisters, the nuns, they do such great service to the nation, to the people, to the poor, to the needy, and they are being attacked, charged with human trafficking, sections like human trafficking and conversion, and this conversion is very, they have done with an intention. There's a conspiracy behind it to divide the people in the lines of religion and to inject the poison, venomous poison of division. Congress MP Gaurav Gogoi on Monday raised tough questions on the government during Operation Sindoor debate in the Lok Sabha. He asked the Defence Minister Rajnath Singh how many of India's fighter jets were downed. He also stated that when the entire country and the opposition were supporting PM Modi, suddenly on 10th of May ceasefire was announced. He questioned if Pakistan was ready to kneel down, then why did India stop and to whom did it surrender to? Gogoi also brought up the issue regarding US President Trump's claim of brokering peace and said Trump has said 26 times that he forced India and Pakistan to announce a ceasefire. क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे
अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye. Thank you so much for watching us, and see you in cinemas. And cut. Break for lunch. Radha, lunch लगा दीजिए please. हाँ. Lovely shot, Yami. Thank you. How are you feeling now? Really? Congratulations. I'm so happy for you. Thank you. तो officially आपके 1000 दिन शुरू होते हैं अब. 1000 दिन मतलब? 1000 दिन न्यूट्रिशन के. Okay, I'll explain you. बेबी के बर्थ से 9 महीने पहले और बर्थ के 2 साल तक का जो पीरियड होता है वो न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो हेल्दी खाती हूँ ना।
You know, I'm pretty strict with my diet. I know you're very strict with your diet, पर इतना strict नहीं होना है. Okay, it's almost like हम बच्चों को सिर्फ maths नहीं पढ़ा सकते. History, geography, science, सभी subject ज़रूरी हैं. वैसे ही प्लेट में वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है. Oh, makes sense. और जब बेबी 6 months का हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी शुरू कर दो. Complimentary feeding. Complimentary feeding, don't worry. I'll explain you. Apart from breast milk, घर का जो खाना होता है उसे जब थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, that's complimentary feeding. और एज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो. जैसे शुरू में 2 से 3 मील्स, फिर 3 से 4, कोई हेल्दी स्नैक फिर इंट्रोड्यूस कर दो. ऐसे. I'll give my best to the baby. I'll make sure. टेक केयर. 1000 दिन न्यूट्रिशन के. शुरुआत छोटी है पर इसका इम्पैक्ट लंबा. Thanks, yummy. थैंक यू मम्मी. नाउ गो हैव फूड. इन्हें तो समझा दिया. उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे. टू ऑल द एक्सपेक्टिंग मदर्स, 1000 दिन न्यूट्रिशन के आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर बच्चे सेहतमंद रहेंगे तो देश का फ्यूचर भी ब्राइट होगा. सही पोषण, देश रोशन. सबसे नতুन खबर और जानकारी गानी त्यादो पाबी अपनी लगा निजोर भाषा नागामिस दे. हुदाई शाम 6 बजे हॉर्नबिल टीवी लगा नागामिस न्यूज बुलेटिन pra खुदे अपनी पाबो डांगोर खबर लगा हेडलाइंस, लोकल खबर और नागालैंड और बाहर दे होई थागिया डेवलपमेंट खान अपनी दुकान सिंपल और क्लियर नागामिस pra साबोले पारबो. जानकारी लोई थागिबी कनेक्ट होई गिना थागिबी हॉर्नबिल टीवी लोगोते. Ready? 3, 2, 1, you. And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. In-depth and straight to the point because the truth deserves clarity. We pursue events that are not only important to you but also useful for our life's perspective. We are Hornbill TV. Join us every month on Health Talks on Hornbill TV, your trusted health show, bringing you expert insights from top doctors, updates on treatments, and wellness tips for a better, healthier life. From lifestyle diseases to mental health, we cover it all because your health matters. Only on Hornbill TV. outside. सबसे नতুन खबर और जानकारी गानी त्यादो पाबी चालीस विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान संपन्न 14,751 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट में बंद 31 जुलाई का है इंतजार।
सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया भाग। कहा, यह अभियान पूरे महीने रहेगा जारी। पेड़ों का हमारे जीवन में विशेष महत्व। सचिवालय में सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए दिए निर्देश। मनसा देवी मंदिर मार्ग चौड़ीकरण को लेकर भी किया निर्देशित। बीकेटीसी में नियुक्त किया गया नया सलाहकार बीडी सिंह। बीकेटीसी में मुख्यमंत्री सलाहकार नियुक्त। बीकेटीसी अध्यक्ष की भूमिका पर उठे सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सिकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव पर कहा कि पहले चरण के मतदान में लोगों में अपार उत्साह था, उसी का परिणाम रहा कि मतदान का प्रतिशत काफी ऊपर गया। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है, दूसरे चरण में भी अच्छा मतदान हुआ है। वहीं उन्होंने मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हमने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। ऐसे सभी स्थान जहां श्रद्धालु आते हैं वहां केयरिंग कैपेसिटी के अनुरूप ही लोगों को भेजा जाएगा। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की जाए। सुरक्षा के नियमों का सख्ती से